So students, we are going to discuss the center of mass. So what is the center of mass? Center of mass is a point where the complete mass of the system gets concentrated. So how to understand this? Let us take an example of a book. Suppose this is the book what I have here. This is the rectangular example. You can consider this is a rectangular plate. Now this book, complete book, I can balance on a single point by a finger. You can see here, this is like I'm taking one point here and I can balance this. You can see clearly. इसको हम बैलेंस कर सकते हैं बेटा, एक पॉइंट पे हम इसको बैलेंस कर देंगे. You can see this. So this is the point where I can hold this and I can balance the complete book. And with perfection, you can rotate this, right? Now, what is this point where I am holding, where I am keeping my finger? That is the center of mass. That is the center of mass. So center of mass is a point where the entire mass of the system gets concentrated and the body or the system is balanced about that point. So that is the center of mass. So if you go for the actual definition on the board, the definition you can see the center of mass, it is the point where the total mass of the system is concentrated. Total mass gets concentrated. That point we call it as the center of mass. And if you see this center of mass, the center of mass, at the center of mass, I can say the matter or matter may or may not exist. A very important point I'm showing you. At the center of mass, matter may or may not exist. Let us see this under the characteristics itself. So what we can do here is, this is the what I'm discussing. It is what characteristics of center of mass. The first one, matter may or may not exist at center of mass. This is the very important point. Matter may or may not exist at the center of mass. What do you mean by this statement? What do you mean by this characteristic? See, just now I have given you an example of a book where I am just balancing. That means I can say the balancing point that the complete mass gets concentrated. That is the center of mass. But at the center of mass, जरूरी नहीं है कि matter होना जरूरी नहीं है. क्या मतलब है इसका? Let us see. Just if I take an example, you can see circular plate. सर्क्यूलर प्लेट की जब मैं बात करता हूं बेटा आपसे, सर्क्यूलर प्लेट, प्लेट यू नो व्हाट इज दिस प्लेट? कंप्लीटली मैटर होता है यहाँ पे इसमें, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, यहाँ पे है. डू वी हैव मास ओवर देयर और नॉट? यस, मास है. हम प्लेट को भी हम बैलेंस कर सकते हैं. जिसको मतलब इसको हम क्या बोलना चाहिए कि मैटर होता है वहां पे, मास, सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे मैटर होता है. लेकिन अगर वही सर्कुलर रिंग लिया बेटा, मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्कुलर रिंग. सर्कुलर रिंग जब लेंगे तो ये सर्कुलर रिंग अंदर क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हॉलो. दिस इज कंप्लीटली नो मैटर एट ऑल. अगर मैं आपसे पूछता हूँ वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, तो आप बताएंगे सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कुलर रिंग. बट मैं आपसे ये पूछा मैटर है क्या वहां पे? नो मैटर. तो जरूरी नहीं है बेटा यहाँ पे मैटर और मैटर मे और मे नॉट एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ. मे एग्जिस्ट, ये सिचुएशन है. मे नॉट एग्जिस्ट, ये सिचुएशन है. इन द सेम वे वी कैन से देयर इज एन एग्जांपल फॉर सॉलिड स्फीयर एंड द हॉलो स्फीयर. सॉलिड स्फीयर की जब मैं बात करता हूं, सॉलिड स्फीयर की जब मैं बात करूंगा, तो वहां पे अंदर अगर आप देखते हैं सेंटर ऑफ मास इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, देयर मैटर एग्जिस्ट. बट if you go for a hollow sphere like a football, where is the center of mass of that? Center of mass will be at the center where there is no mass. So matter may or may not exist at the center of mass, the very important property. Next, here the next property I am writing here, position and motion of center of mass is not affected by
internal forces. All the properties are very, very important. On every property, the problem can be framed. So position and the motion of the center of mass is not affected by the internal forces. What do you mean by this? अगर कोई चीज internal force से अगर something like a blast हो रहा है या explosion हो रहा है because of the internal forces, ना तो center of mass का position change होगा बेटा, ना तो उसका motion change होगा. For example, try to understand what I am saying. अब internal force, I am taking an example of explosion or blasting. Just you take a small cracker. You take one cracker and let it to explode. Once it get explode, you know, the different particles will move in different directions. Different particles will move in different direction. But if you go and check the place where that cracker was exploded, some traces will be there. Some traces of that cracker will be there at that place where the cracker was kept before the explosion. So that particles themselves, they are the center of mass. क्यों? Because वो center of mass पे internal force का कोई effect नहीं हुआ. All the particles of center of mass that will remain there only. That is, the position will not get affected. Now, if you take the example for like motion of the center of mass, suppose just for this, this is the best example what we can have. This you can expect in the exam also. This is for position. I have said you the example. Cracker explodes होता है तो position of the center of mass जो है ना बेटा, cracker जहां रखा हुआ है वहां पे उसके traces मिलते हैं. That traces itself is nothing but the center of mass. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं position की तो मैं बात कर चुका हूं. What do you say about the motion of the center of mass? Motion of the center of mass के लिए just you see, यहाँ पे just imagine कि भाई यहाँ पे एक टारगेट है, कुछ टारगेट है, एनिमी है. आप उसको क्या करना चाह रहे हैं? एक शेल से उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं. सो फॉर दैट व्हाट यू डू कि भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कैनॉन लगाए और यहाँ से हम एक शेल को लॉन्च करें. ये शेल लॉन्च होके बेटा ऐसा जाएगा, और जरूरी नहीं है ये जो शेल है ना बेटा, ये शेल जो हम विच वी आर यूजिंग टू डिस्ट्रॉय दिस टारगेट, वो शेल को पता नहीं होता कि भाई टारगेट पे हम रीच हो गए, अब हमारे को एक्सप्लोड होना है. बॉम्ब को नहीं पता चलता. अब ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह हम जो व्हाट वी ऑब्जर्व इन आवर फिल्म्स के भाई डायरेक्टली उस टारगेट पे जाने के बाद ही वो एक्सप्लोड होता. अगर अनवांटेड टारगेट पे आ गया, किसी के हैंड में आ गया, तो देन व्हेन ही थ्रोज उसके बाद वो एक्सप्लोड होता. ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, तो दैट बॉम्ब और द शेल डजंट नो दैट द टारगेट हैज बीन रीच्ड और नॉट. कहीं पे भी एक्सप्लोड हो सकता है बेटा वो. तो व्हेन वी आर थ्रोइंग दिस टू डिस्ट्रॉय दिस वन, बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, बेटा ये एक्सप्लोड हो गया इन द मिड एयर में ही अगर एक्सप्लोड हो जाता है ये, इफ इट इज गेटिंग एक्सप्लोडेड इन द मिड एयर, then what happens? The different particles will move in the different direction, but the motion of the center of mass will not get affected. ये पहले पैराबोलिक पाथ में था, तो अभी भी ये जो सेंटर ऑफ मास जो रहेगा ना बेटा, इसका जो सेंटर ऑफ मास जो इस तरह से मूव हो रहा था, बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ये एक्सप्लोड हुआ. डिफरेंट पार्टिकल्स विल बी मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन एयर, लेकिन ये जो सेंटर ऑफ मास है, इट विल बी ट्रेसिंग द टारगेट. ये टारगेट पे जाता है. So I have explained you the position of the center of mass as well as the motion of the center of mass is not affected by the internal forces. Then ये इफेक्ट तो इंटरनल फोर्स से नहीं हो रहा है, तो किससे इफेक्ट होगा? तो अब आप आइए, किससे इफेक्ट होगा? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पोजीशन एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इफेक्टेड by external forces. Affected by the external forces. So what do you mean by this? क्या मतलब है बेटा? Just एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है. Where is the center of mass? At the center. Now I apply some force on that. So this block has been displaced to this position. Where is the center of mass? Here is the center of mass. That means the center of mass has been shifted from one position to another position. by what means? By means of some external force. तो बेटा यहाँ पे एक very important चीज ये पता चली कि भाई center of mass is not affected by the internal force, okay, but it gets affected by the external force. That is also one of the property what we need to study. The next property is, if you take the moments of all the masses, try to understand the moments of all the particles, I can say about the center of mass is always zero.
See the next property. The moment of the masses of all the particles, पूरे particles का अगर आप moment लेते हैं about the center of mass और पूरों को sum करते हैं बेटा, तो आंसर आपको आना चाहिए 0. क्या है, what do you mean by moment? Moment means the product of mass और उसका distance center of mass से. अगर आप पूरे particles का अगर आप moments निकालते हैं, moments of all the particles of masses about the center of mass से अगर हम moment निकालेंगे, then what we observe here is पूरों को हम एड अप करते हैं तो आंसर हमारे को 0 आएगा बेटा. तो इसको हम कैसा डिनोट करेंगे, जस्ट हम डिनोट करते हैं सिग्मा एम एक्स, that is mi xi is equals to 0. I repeat once again, what do you mean by this? This means the moments, or I can say the sum. Sigma means it is sum of the moments of the masses. Moments means we have to multiply with the distance, what I have done here, mass into distance. अगर आप mass into distance करते हैं हर particle का about the center of mass और पूरों को हम add करते हैं, then answer will be 0. That is one of the again characteristic or the property of the center of mass. So once again, let us revise. Matter may or may not exist at the center of mass. The examples I have given. Position and the motion of the center of mass is not affected by the internal force. This is the example for the motion. The cracker example I have given for the position. Next, the position, if it is not affected by the internal force, then it is affected by the external force. The third property. And the fourth characteristic, what we have seen, the sum of all the moments of the masses about the center of mass is always 0. Hope you have understood the characteristics.